ऐसे थोड़ा ना होता है, स्टे कागज थोड़ा ना दिए जाते हैं हाई कोर्ट में। My lord, we'll अगर मैं चीफ सेक्रेटरी को आज लिख दूंगा तो आप, यू मे बी इन ट्रबल। दिस हाई कोर्ट इज नॉट टू बी टेकन लाइटली। यू आर नॉट अबाउट द हाई कोर्ट। Lord, the officer is present before your lordship, Lord. What is the order? At the outset, Lord, I'm tendering our very humble apologies, Lord. बोलो जी, आपको जरूरत नहीं है ना अधिक। नहीं sir, the council could not assist your lordship properly. I'm very sorry. पढ़िए, ऑर्डर पढ़िएगा कल का। Lord, Shri Atul Dwivedi has produced a notification of the land acquisition issued by the collector Eva dated 10/5/91, when he is asked to show cause as to when compensation was paid in favor of the petitioner in terms of the notification that shows intention to acquire land contained in survey number 493 measuring 0.425 hectares. He is not in a position to assist the court. This is a serious matter that advocates representing the state are not prepared to assist the court. Reluctantly, I direct Collector Riva to remain personally present to assist the court. This is the case tomorrow on 7/1/2025 on top of the list, when the Collector Riva shall remain personally present before this court. ये बताइएगा, जब आपने लैंड एक्वायर कर ली, मुआवजा किस तारीख को दिया? Lord, the award was, I prepared a very short chronology. 793 from the Lord, number 6, Lord. 7690. On 7/6/93, the award was passed by the land acquisition officer. हाँ, What had happened, Lord, the money was kept ready. They did not accept the money, Lord. where is the where is the denial document? We have the original records. हाँ, They got a petition. There is, in fact, they had appeared. where is the This original. The original document, Lord, the file would reflect, Lord, that they appeared. I They appeared who है ना? They replied to it. They can be. The document number 1 that is there, I'll just hand over the document number 1 is the notification under section 4. यहाँ पे सर उनका रिप्लाई है जो हमने क्रोनोलॉजी में अपने डॉक्यूमेंट के साथ लगाया था. इस chronology- This is the original. ये ओरिजिनल ऑर्डर शीट है Lord. They had filed their objection also, Lord, and they had filed their वकालतनामा भी उनका ओरिजिनल लगा है. वकील साहब प्लीज, जी. ये 91 की ऑर्डर शीट दिखा रहे जी. हैं आप. जी. अवार्ड पारित हुआ 7/6/93 को. 7/6/93 को कब आपने ऑफर किया, उसके बाद इनको कंपनसेशन, और इन्होंने कब डिनाई किया, उतनी डेट बता दीजिए, डॉक्यूमेंट दिखा सर दीजिए. उसके बाद ये हाई कोर्ट आ गए सर. अरे भाई, जी. हाई कोर्ट ने ये कहा क्या कि आप इनको अवार्ड का पैसा मत दीजिए? नहीं 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 स्टे था क्या? नहीं. ऑर्डर बताइए, हाई कोर्ट का ऑर्डर बताइए. Lord, that's document number 3 में. 3 कॉपी ऑफ नोटिस एंड एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड. जी. कौन सा? ये जो आपने दिया है इसी में से बता रहे हैं ना, क्रोनोलॉजी का. जी. इसका सीरियल नंबर सीरियल नंबर 3 Lord at page 6. पेज 6 क्या है उसमें? ये order is on page 7 Lord. हाँ. The order passed by the High Court. क्या This is the applicant number 6 Rajesh Kumar Tiwari is present in person and is heard on IA number so and so for amendment of the petition and joining the applicants mentioned therein as petitioners. Since the petitioner have no objection to it, the application is allowed. The applicants are permitted to join as petitioners. Let the petition be amended within 10 days. IA number so and so for stay is also considered. The stay order dated 19/8/93 passed in favor of the original petitioners will also accrue to the benefit of the newly added petitioners.
And these newly added petitioners will also not be dispersed from the land under acquisition. Where is this order dated 1993? रिकॉर्ड से दिखाइएगा वकील साहब। जी, मालूम। क्या है ये? क्या है? 93 का डू उसकी कॉपी उनको भी दीजिए ना। ऐसे थोड़ा ना होता है, स्टे कागज थोड़ा ना दिए जाते हैं हाई कोर्ट में। मालूम। Will your lordship may either grant us time or we'll file. Today case is fixed Sir, with because great- we were not assisted. This court was not given assistance. Therefore, we called your collector. Right. Given a very fabricated certificate, very frivolous and fabricated certificate. with greatest. But since doctor is not before this court, I'm not taking any action against him. Now I'll not grant you any time. You are required to address this court right now. अगर मैं चीफ सेक्रेटरी को आज लिख दूंगा तो आप you may be in trouble. I'm taking a note, sir. Support. This high court is not to be taken lightly. You are not above the high court. You are there to serve the poor people. And if we call you not to see your face. We call you to seek, to get assistance because your counsel are not in a position to assist. This I have noted yesterday. We have no personal work from you. इतनी एरोगेंस मत दिखाइए। मुझे तारीख बताइए, इसमें पोजीशन की बात आ रही है, मुआवजा देने से पे करने से कहां रोका गया ये बताइए। That order was challenged by them, Lord. Order may have been challenged, but in the first place, you are required to show that you raised first argument that this gentleman refused to accept the compensation. Yeah. Now, complete that argument, show me a document that you offered him compensation, then you change the line, और आप उस पर आ गए कि साहब नहीं वो तो हाई कोर्ट से स्टे हो गया था। अब आप मुझे दिखाइए, एक करके चलिए, आपके तीनों आर्गुमेंट मीट करूंगा मैं। अब ये दिखाइए कि हाई कोर्ट से मुआवजा देने पर स्टे था। अब आपने तीसरा आर्गुमेंट किया दैट ऑर्डर वाज चैलेंज। नाउ वेयर इज दैट ऑर्डर चैलेंजिंग दिस ऑर्डर ऑफ लर्नेड सिंगल जज? नहीं, ये तो डीबी का ऑर्डर है। चैलेंज दी अवार्ड। हाँ। अवार्ड उन्होंने चैलेंज किया। किसने? पिटिशनर। नहीं किया था, उस पे पोजीशन पर स्टे था, पैसे देने के भुगतान पे स्टे था क्या? उनका केस ये है कि क्योंकि 2013 के अधिनियम आने तक आपने भुगतान नहीं किया है, इसलिए अब नए एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। यही केस है ना आपका? सर क्या? अब आप मुझे सिर्फ डेट्स बता दीजिए, 4 डेट्स बता दीजिए। आपने अवार्ड की डेट बता दी, ठीक है, 7/6/2013 ठीक है, मान गए इसको। अब इसके बाद यह आपने पहला आर्ग्यूमेंट जो किया वो दस्तावेज दिखा दीजिए दैट यू ऑफर्ड कंपनसेशन एंड दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कंपनसेशन। तो मालूम है कि अवार्ड हो गया। नहीं ये नहीं, उसके डोंट मेक अ फ्रिवलस आर्गुमेंट। यू रेज्ड इट, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। You raised an argument in front of the collector saying that they refuse to take the compensation. Refusal comes when something is offered. Now show me the document that this amount was offered to them and they refused to accept the compensation. Please, I'll not allow you to change the track. The award was there. The award is there. They मतलब यह है कि एक आदेश है तो हम जो है पीछे पीछे घूमेंगे कि सब आदेश है, आप हमें मुआवजा दीजिए, ऐसा प्रावधान है लॉ में? बताइएगा। 1894 के एक्ट को पढ़ के बताइएगा कि जिस व्यक्ति की भूमि एक्वायर की गई है वह कलेक्टर साहब के पीछे पीछे घूमेगा कि साहब मुझे मुआवजा दे दीजिए। आपने जो was never paid, come to the second argument. Now then we will examine your second argument. I'll just verify. Compensation was not paid. They the award was for the moment दिया। Sir, They went for I apologize. The compensations were not paid. When the award was passed, they did not turn up to accept. When was notice given? Now the law says, मैडम आपने पढ़ा है एक्ट की नहीं पढ़ा है? हैं? बताइए किस प्रावधान में है कि आप नोटिस देंगी कंपनसेशन लेने के लिए? बताइए। Now I'll ask you, give me the provision which says that a person who has been ousted from the land
will come to the collector asking for compensation. Please show me the provision. में भी पढ़ाया जाता है. और फिर जब आप कलेक्टर हैं तो यहाँ रोज पढ़ती होंगे कानून. कहाँ प्रावधान है कि लैंड आउस्टी आएगा मुआवजा मांगते हुए? इज अ बेगर. चलिए अब वो बताइए ऑर्डर जिसमें कि आपको मुआवजा देने से स्टे किया गया, और वो ऑर्डर शीट दिखाइए जिसमें आपने नोट किया क्योंकि ये पिटीशन पेंडिंग है इसलिए मुआवजा नहीं दिया जा सकता, या मुझे मुआवजा देने से रोका गया है स्टे के चलते हुए, इसलिए जो है मुआवजा का भुगतान नहीं कर रहे. तो दिखाइए ऑर्डर शीट. श्री राजेंद्र सिंह, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर. Shri Harpreet Singh Rupra, learned senior advocate, assisted by Shri Akash Malpani, along with district collector Shrimati, आपका शुभ नाम बताइए? प्रतिभा पाल. Miss Shrimati Pratibha Pal. Next. 3 arguments have been put forth by Shri Harpreet Singh Rupra, namely 1, 2, 3 करके लिखिएगा. 1. Petitioner had refused to accept the compensation and therefore petition deserves to be dismissed. 2. Petitioners had filed a writ petition before the High Court seeking enhancement of the compensation, and that miscellaneous petition was registered as MP number 2559 of 1993. Therefore, compensation was not paid. Third argument is that since there was an stay from the High Court, therefore compensation could not be paid. Full stop. Next paragraph. When examined, then first in support of first argument, contradictory statements are being made in the open court by learned additional advocate general and the collector Riva. Full stop. They have changed the track and say that petitioner never approached the collector to seek compensation. Full stop. Next, when learned collector is requested to show legal provision forcing a land oustee to approach the collector and beg for compensation, she is not in a position to assist, though she agrees that, though she confesses